Okay, so today I'm sitting in CCD IIT Madras campus, and I'm there with the students of MS. MS is a program which is a very prestigious program, but I believe that students in India are not much aware about MS program. IIT Madras is NIRF ranking number one institute in India, and if you ask me honestly, I believe that MS program of IIT Madras is the best. Whether it is a research proposal which they concentrate on, or the interview which professors take at the time of inductment, or the course curriculum and the duration, all these factors if I consider, I can very honestly tell you that MS program of IIT Madras is the unique and a reference program. And today I'm sitting with the MS students, and I request all of you to give your frank opinion about this particular course. I'll keep on asking you question on the basis of the doubts of my students all over India, and couple of years back you were also thinking the same. तो एक इस वीडियो को हम ऐसा बनाएंगे कि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट को मिले, and we will make it very informal in the sense that I will have a questions. Whosoever wants to answer the best way, they can take the call and they can answer it. So my first question to you is, अगर कोई स्टूडेंट ये पूछता है कि साहब MS और MTech में डिफरेंस है क्या, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का ये होता है बीटेक वालों का कि MS और MS में डिफरेंस MTech में क्या है, तो इसका क्या हम आंसर कर सकते हैं वेरी स्ट्रेट. हु वांट्स टू टेक दैट कॉल, हु वांट्स टू आंसर दैट? या योर नेम फर्स्ट, योर डिपार्टमेंट फर्स्ट, एंड देन आंसर. So my name is Gopesh Krishna Yadav, and I am from MS Aerospace Engineering. So the basic difference between MS and MTech is that MTech is like course oriented. Okay. We have to do 10 courses in MTech. Okay. While MS is research oriented. Okay. We have to do our research work. We have to at least publish one journal paper. Okay. And our course load is not as much as MTech people. Okay. We have to do only 5 courses. Okay. Okay. And now one more thing. You want to add to this also? I want to add something and correct Your name something. and your department. I want to add something and correct something. Yeah. My name is Sagar and I am pursuing MS by research in aerospace engineering. Okay. So first thing, MS by research, whatever we are doing, we have to do research, and there is no requirement actually to do conference paper or something. So paper is not compulsory. Is not compulsory, but Okay. it is advisable to have at Paper. least one conference paper which is peer reviewed. Okay. So it will be easy to correct your thesis. Okay. At a later stage, review your thesis and all. Mhm. So it is makes process easy. So every professor has a little bit of their own thing, their Requirement rules from and the requirements. students. So for that, another thing is if you go to abroad, USA, and USA there is a two type of courses: MS with thesis, MS without thesis. Okay. That is simple in India. MS without thesis, which is MTech. Okay. MS with thesis, which is MS by research, whatever we are doing. Okay. There is IIT Madras particularly Okay. offering MS. Okay. Okay. So this is the thing, and for MS by research, whatever we are doing, we have to do up 5 courses, which is relevant to our research or not. That is depend on the professors. And for MTech, there is always some kind of courses they have to do one project and then can go. Okay. But in research, you have to complete the courses. You have to do the research. You have to publish paper if you want to, and if the requirements of the guide. And after that, you can submit the thesis. And after submitting the thesis and submit the thesis is approved, then you can pass out. Okay. Wonderful. So any other addition to this MS versus MTech? Hello everyone, I am Parth. I am doing interdisciplinary MS research here at IIT Madras. Adding to the points which Sagar added, one more thing is MS is not exactly time bounded. We get stipend of HTRA same as that of MTech, 12,400 rupees per month for 2.5 years when compared to 2 years for MTech. After that, based on your performance and your guides availability of funds and projects, your faculty may further support you for completion of your project. Okay. So now let me ask you another question which comes from the students only, and the question is related to duration of MS program. I want you to tell us two things. Number one, what can be the average duration, या duration होता कितना है? MTech का हम जानते हैं 2 साल है, MS का duration कितना होता है IIT Madras में? That is first question. And the second is, if the duration is more, तो ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? बिकॉज मैं कल भी इंटरेक्ट किया था स्टूडेंट्स के साथ. सम स्टूडेंट्स आर सेइंग 2.5 years, somebody saying even it can be 2, somebody saying 3 years, somebody saying 3.5 years. So it depends upon what factors, duration. And तीसरा क्वेश्चन जो होगा, that I will repeat again, that is
if we are spending more time in the institute like IIT Madras, let us say 6 more months, तो इसका advantage क्या होता है? Is it advantageous or disadvantageous? That is my third question. So if you want to answer duration of MS. Sir, coming to duration, as I answered, duration is in general we get stipend for 2.5 years. So more or less, students try to complete in 2.5 years. That is average. That is average. At times, people take 3 years also, and there are some good cases wherein people complete in less than 2 years or 2 years also. Okay. Now coming to case, like my 2.5 years are over. Okay. Currently, my guide is supporting me financially from his funds. Project. Correct. And that amount I don't want to disclose, but it is higher than the what HTRA we get. Okay. And coming to what happens if it is the duration is extended. अगर मुझे extra time मिला है, if I have got extra time, I have utilized it in parallel preparation. Like I have prepared for non-core. Okay. So it depends on student to student how student takes it. It is anyways advantageous for research, like extra time, and if you are dedicating it for your research, the quality of your output increases and the quality of good core placement also increases if you are focusing on core. So can we say that if we spend 6 more months in MS, that actually is adding to our maybe CV or our knowledge or our skills, instead of, we cannot say it is a wastage of 6 months. Am I right in that? Definitely, sir. It's not wasted. It is only increasing our skills. It's increasing weightage. You can do some parallel things also. Like not now, before this, I was part of some extracurricular teams like Team Avishkar Hyperloop, wherein we have built Hyperloop pod. Okay. And our team won first award in scalability in European Hyperloop Week 2021. Okay. वर्ल्ड हम फर्स्ट आए थे. उसके बाद जो एक्सपोजर है वो डेफिनेटली आपका रेज्यूमे में या आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है, और उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आपके प्लेसमेंट में भी पड़ता है. सही बात है. Now, JD, you are also coordinator of placement cell or something you told yesterday. So एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Whenever we advise students to take MS, then they ask a simple question. Even duration is not the most important question. Most important question is that, sir, is placement in MS program as good as MTech program? क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि सब प्लेसमेंट एमएस में एमटेक से अच्छी नहीं होती, ये उन्होंने सुना होता है. सो व्हाट इज योर आंसर टू दैट? माय आंसर इज दैट दिस इज ए मिसकंसेप्शन बिटवीन द पीपल के एमटेक इज वी गेट मोर प्लेसमेंट इन एमटेक एंड एमएस इज नॉट लाइक दैट. व्हेन I came here, I don't know about these things. I also think like MTech is good than MS. Then I came here and I see my seniors and all the seniors and from my department and other department. Then I see ke MTech people MS people are getting more placement than MTech people. I am in placement team. तो मुझे पता है, मेरे पास स्टैटिक्स है पिछले साल का, उससे पहले उससे भी लास्ट ईयर का. तो मुझे पता है कि एमएस में एमटेक से ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं. ओके. एमएस में एमटेक से भी ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं, और पैकेज एवरेज देखा जाए तो एवरेज पैकेज भी एमटेक से ज़्यादा ही है. लास्ट 2-3 ईयर से ये एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है इधर आईआईटी मद्रास में कि एमएस वालों को प्लेसमेंट ज़्यादा मिल रहा है इधर. सो यू वांट टू ऐड समथिंग, राइट? First on the duration. Okay, yeah, go ahead. 6 महीने में क्या ज्यादा मिल सकता है? Okay. So first thing, if you're doing the research, you can have opportunity to collaborate with PhDs, yes, postdocs and all. Yes. If you want to do the PhD, if you are thinking on that, you can convert also. Wonderful. ये एक benefit है. और ये कितना ड्यूरेशन लेगा, ये बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है कि आपका गाइड कैसा है, आप कैसे काम कर रहे हो, और आपका रिसोर्सेज कितना है, और आपका जो भी रिसर्च है वो कितना डिपेंडेबल है एक्सटर्नल फैक्टर से. सो ये बहुत सारी चीजें उस पर भी अफेक्ट कर जाती है, जो हमेशा गाइड सिलेक्ट करने से पहले डिसाइड कर लेनी चाहिए. और उसी पे परव्यू कर लेना चाहिए एट दैट टाइम. और बाकी तो जो रिसर्च कर रहा है उसके ऊपर काफी निर्भर करता है कि वो कितने टाइम में खत्म कर सकता है. एंड प्लेसमेंट का ये चीज है कि उसमें भी काफी लोग यहाँ से ऐसे भी निकलते हैं एमएस वाले. lot of my friends in the electrical engineering and the applied mechanics are like they're not sitting in the placement, but they go to the off campus and getting a very high package. Okay. Better than that in their research fields. Okay. तो वो जो रिसर्च फील्ड की कंपनियां नहीं आ रही है तो वो नहीं बैठ रहा है, और बाहर जाके जहाँ पे जितना भी कंपनियां ऑफर कर रही है उससे ज्यादा उनको 2 times बेटर उनको मिल रहा है वहाँ पे. सो प्लेसमेंट साइड में बाहर जाके भी मतलब
प्लेसमेंट ना भी लगे तो बाहर जाके भी प्लेसमेंट्स अच्छा मिल रहा है. Okay, so दो बहुत important points you have provided. One is like why MS में duration is different for different people. You said choose the professor accordingly. Some professor want you to put more work for your benefit, and that is the reason more time may be taken. Sometime you are working on a project and you may feel like completing it and learning more. And जो तीसरी बात आपने बोली कि बाहर जाके कंपनी से आप उठा लेते हो जॉब, वो कॉन्फिडेंस तभी आता है इफ यू हैव स्किल. Skills. इफ यू डोंट हैव स्किल यू कैन नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू गो टू द कंपनी एंड से ओके हायर मी. So मेरे को लगता है कि एक्सपोजर टू द कंपनीज थ्रू द प्रोजेक्ट व्हिच प्रोफेसर इज डूइंग मे बी मोर इन एमएस प्रोग्राम. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. Also CV में if you want to go into CV of MTech and MS people, Yes. तो MS people के पास always have a one project. Yes. Or always have a one research. Yes. That is research. Yes. So better than MTech project. Yes. So always have a edge of that. They have a better understanding, better collaboration with others. Yes. MS people always have a benefit to have their 6 months or 7 months research in somewhere abroad, Yes. collaborate with another universities. Yes. Or also MS people have sometimes opportunity if professors allows and professor have some kind of collaboration with another professor in the abroad. Yes. They can collaborate and do research. Yes. So there is a lot of opportunity like that. They can explore after coming to the MS. Wonderful. One more point you said that if somebody has decided to go for PhD, nothing can be better option than MS Yes, because yes, it is called mini PhD also. Right. Because as you were saying that अगर आप काम करोगे तो आपको रिसर्च आप निकाल सकते हो, एक पेपर आप निकाल सकते हो, whether it is conference or journal. Right. पर जब आप काम कर रहे हो तो प्रोफेसर also expects that why not you Right. come out with it later stage पे if you want to go for PhD that paper really helps you. Correct. So yeah. आई वॉन्ट टू ऐड वन थिंग कि जैसे ये गाइड के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें मतलब जर्नल पेपर चाहिए या फिर कॉन्फ्रेंस पेपर पेपर चाहिए. चाहिए. Yes. और आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग ऑल्सो specific to aerospace department. Okay. In MTech aerospace, we study all subjects. Okay. While MS aerospace is like specialized. Okay. So there are specializations like structure, aerodynamics, Okay. and flight mechanics and control and propulsion. Okay. So placements are if we are specialized, then we will get good placement according to our specialization. We can go in that field. But MTech people are like that. They can go anywhere. Okay, generic हो जाता है. Generic हो जाता है. But आपका ज़्यादा specific है. हमारा ज़्यादा specific. Okay, now I come to both of you. I think you were talking when we were talking before the recording. You were telling something about MS कि आजकल companies MS को क्यों prefer करती हैं. I want you to tell us about that. First, your name, department, and answer this question कि nowadays why companies are preferring MS people. Okay, so first of all, my name is Imran. I am in aerospace engineering department. My specialization is aerodynamics, flight mechanics, and control. Okay. So as I was talking today, scenario in India is different from past, where IITs were established and many engineering colleges were established just to provide a workforce that our country needed to drive our country. Yes. As we are in developing stage, Yes. so our country needed a lot of engineers. Today the scenario has changed. Our country has grown a lot, and now we need to focus on our research and development. You can see in many projects, specifically in aerospace, I would like to say that India is currently in development of a 5th generation aircraft. Yes. You cannot simply achieve that on basis of engineering alone. You need skill sets. आपको बहुत ही specialized लोग चाहिए. Yes, and the research should be top quality. Yes. So now coming to this MTech versus MS debate. So MTech students have a fixed amount of duration, that is 2 years, and they have to complete all of their coursework Yes. as well as their project in those 2 years only. And then go. So basically the skills that you gain from IIT, like many skills, once you enter the IIT, it's all about environment. आपको लगता है 2 साल बहुत कम है. Yes, the difference between an IIT student and non-IIT students is all about environment, I think. I think other students have same skills, but the environment that IIT gives, No doubt. that is different. You for example, like artificial intelligence, programming, and many other things, the skill sets that you gain here, it's better if you have more time. Yes. For example, for 6 months, if a student is completing his project and is using some kind of technique, for example, reinforcement learning or deep learning, he will not be able to explore it that much in 6 months only. But if a student is spending like 1.5 years just for his research, imagine the amount of the skill set that he will develop in this. So that is why this MS students are generally preferred more
in the because companies. their enhanced skills are Yes. better than MTech students. Yes. And these days even companies are forcing Requiring that. requiring Those kind of have a lot requirements. of requirement in their R&D divisions. So they are working on this. सो वेरी वेरी रेलिवेंट पॉइंट दैट आजकल हर कंपनी का R&D विंग है Yes. और इंडिया की इकोनॉमी स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है Yes. और आपको बहुत ही स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है, टेक्नोक्रेट्स की रिक्वायरमेंट है और MS एक कोर्स है विच हेल्प्स यू टू एक्वायर दैट स्किल. So that is the crux of what you said, right? Yes, sir. Now coming to you, your name, department, which part of India you are from, and question for you is कि अगर हम 6 months ज़्यादा लगाते हैं in the campus of institute like IIT Madras, which is beautiful campus, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? I mean, why students से नहीं 2 साल में मेरे को भाग जाना है and मेरे को 2.5 साल नहीं लगाना है, 3 साल नहीं लगाना है? So this question to you. My name is Mohammad Zahid. I am from Ambedkar Nagar, UP, Uttar Pradesh. Okay. So the thing is that if you are getting more than 6 months more, Yeah. then you can work on your skills. This is the best thing. And what I feel that in MTech, if you compare between MTech and MS student, the MTech student, as my friend already told, that MTech students are doing only coursework, then they will get only 6 months for their project. But for MS, we are getting lot of times. If you want to work on your skill, then you will get lot of time. That's the thing. So if you are getting more 6 months more, then it is very beneficial for us. तो जैसे स्टूडेंट जब वो उनके पास ऑप्शन मिलता है ना कि हम MTech करें, MS करें, तो उनका एक लॉजिक होता है कि MTech is of 2 years, so early I go into job, early I complete my MTech, early I go into job, early I start earning, और MS में I will take more time, I will not earn. So इस क्वेश्चन का क्या आंसर है आप लोगों के पास? इसमें एक चीज सबसे अच्छा ये भी होता है कि MTech में जो है वो उनका जैसे कोर्स फिक्स्ड कोर्सेज होते हैं MTech में, वो कोर्सेज हमें करने ही करने हैं जो MTech स्टूडेंट्स हैं. और MS में ऐसा क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो आप इंटरेस्ट है, जैसे आपका जो रिसर्च वर्क से रिलेटेड है, आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं और आप अपने गाइड से बात करके, अगर आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे किसी का इंटरेस्ट डेटा साइंस में है, तो वो अदर डिपार्टमेंट्स के कोर्सेज को भी ले सकता है डेटा साइंस का जो. तो इसके लिए ये मुझे लगता है कि MS जो है वो बेटर है MTech से. ओके, वंडरफुल. सो आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स टच कर लिए हैं और अगर कोई पॉइंट मेरे से नहीं टच हुआ है तो यू कैन ऐड टू दैट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू. One point that Gopal said, we have specific knowledge, not we don't have specific knowledge. We have research on specific field, but वो रिसर्च में जो हम सीखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ चीज़ें हम जैसे मेरा जो रिसर्च है उसमें मैं मशीन लर्निंग सीख रहा हूँ, ठीक है, और some courses I am doing from electrical department, some courses I am doing from CS department. तो ये स्पेसिफिक नहीं है, हमारी रिसर्च स्पेसिफिक है, पर जो स्किल्स हम यहाँ सीख रहे हैं ना उस रिसर्च के लिए वो स्पेसिफिक नहीं है. तो जो कि हमें एक वाइड रेंज मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि हम उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च किए तो हम उसी फील्ड में, हमारे पास वाइड रेंज है. हम नॉन कोर में, जैसे मेरा जो है मशीन लर्निंग के ऊपर मतलब अच्छा काम है, तो उस पे नॉन कोर में एक अच्छा पैकेज उठा सकते हैं हम. और कुछ इलेक्ट्रिकल वाली कंपनियां होती हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आई एम डूइंग इन माय रिसर्च इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड सम मैकेनिकल थिंग्स एंड some machine learning modules also there. Okay. So Okay. yes. So this is all things. Okay, so you can learn different skills from Yes. different departments. Yes, we are not Wonderful. specific To we are one particular. doing research specific, but we are not know that specific things. Okay. We can put in a different way also. This is if you're doing research, you first you start the process. You read like lot of papers for literature review. After they're coming to the point, you and your guide sit together and you're making one problem and then solve it. So this is the any process of any problem solving process as this process. If you learn this, so you can solve any problem in the later stage also, Right. by doing the research. So by going this process, you can be a better problem solving person, that is engineer. Right. So you can have any kind of thing you can learn later also, you can solve later also. So this can be a benefit of the doing research actually, and to living a life in the research. You can learn a lot of things like this. So eventually overall you can get a lot of thing by doing the research. अच्छा, मैं एक पॉइंट तुम्हें बताता हूँ कि बच्चा ना रिसर्च के नाम से डरता है. हाँ. बीटेक के स्टूडेंट को बोलते हो रिसर्च तो घबराता है वो. तो कहने से कि रिसर्च इज नथिंग बट अ स्किल. एम आई राइट इन दैट?
या कुछ रिसर्च अलग चीज है, क्या है? मतलब We जब हम बोलते हैं मैं we- रिसर्च कर रहा हूँ मींस व्हाट? we cannot say directly it's skills or something. What is research? Something you थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट. you read a lot of paper. Let's say you read a 60, 70, 80 papers. Okay. After paper you find that this problem This is is what I am not to yet do. touched. कि इन्होंने ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, ये पर इसको ऐसे तरीके से भी करा जा सकता था, इसको ऐसे तरीके से भी करा जा सकता था, ये सब पता है. ठीक है. कि ये तरीके से करा जा सकता है. या फिर आपको पता है कि कोई एक डिफरेंट मेथड है, कि आप समझ लो कि मेरे पास वेरिएशनल एसिम्प्टोटिक मेथड करके एक मेथड है जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, एंड यू थॉट कि किसी ने अप्लाई नहीं किया, मैं तो अप्लाई मैं कर कर सकता सकता हूँ. हूँ. देन यू हैव अ प्रॉब्लम Okay. कि FA किया है, इसने ये किया है, वो किया, वॉट एवर, And I बट want to इसको do अलग this. मेथड से कर सकता हूँ, और आपने किया एंड आपने उसको सॉल्व किया, दैट इज रिसर्च. Wonderful. कि आपने कुछ अलग तरीके से किया, या फिर आपने कुछ नया किया, ऐसा कुछ डिस्कवर करना या फाइंड करना, इसको रिसर्च नहीं है. मतलब यू कैन पुट अ डिफरेंट वे, इफ यू कैन सॉल्व अ डिफरेंट वे, उसको भी रिसर्च बोल सकते हैं. आप कभी कभी ऐसा भी होता है रिसर्च में कि आपने कुछ सॉल्व करने का ट्राई किया, आपसे नहीं हुआ, तो ये भी एक चीज है कि आप इस मेथड से ये वाली चीज को सॉल्व नहीं कर सकते. दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो सॉल्विंग. दैट मींस थिंकिंग समथिंग न्यू, थिंकिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो सारा मिल मिला के रिसर्च बोल सकते हैं. Right. और इन द प्रोसेस आपका स्किल तो एनहांस होता ही है. एनहांस हो रही है. ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा. We were talking before this recording session started, and you were talking that you are interested in non-core jobs. I want to ask you, like, if a student joins IIT any department and he wants to be non-core, and you will also tell me what is the meaning of non-core, तो क्या उसको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज है? बिकॉज द मोमेंट स्टूडेंट्स ज्वाइन अ डिपार्टमेंट, ही सेज सर इस डिपार्टमेंट में मेरे को सिलेक्शन हुआ है, तो क्या मेरे को जॉब लग जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा? एंड अगर नॉन कोर की मैं बात करूं तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चन को लेके? Thank you, sir, for this question. No, सबसे पहले, what is non-core? Non-core is something which you are going out of your core research. Let's say my core research is in mechanical design or electrical electronics, some power systems, and I say I don't want to go this. I want to go in coding job. I want to go in AI ML. I want to go in consultancy, be it whatsoever. अपना parent subject of expertise के बाहर निकलना is non-core. अभी प्लेसमेंट कैसा होता है? सो जो कंपनी आती हैं, अगर वो आपके डिपार्टमेंट के लिए खुली है, आपको तो उसके बाद मैटर नहीं करता है कि आपका कौन सा प्रोफाइल है, क्या है. अगर आपके पास स्पेसिफिक स्किल सेट है तो आप प्लेस हो सकते हैं. एक कंपनी जो आई एम कमिंग फ्रॉम इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, माय पेरेंट डिपार्टमेंट इज मैकेनिकल, तो एक ने जिसने मैकेनिकल एमटेक के लिए खोला है और मैकेनिकल एमएस के लिए खोला है, कंपनी एक बार ओपन हो गई तो उसके बाद सिर्फ आपका स्किल सेट है. फाइटिंग के लिए अब फर्क नहीं पड़ता कि आप एमटेक से आ रहे हैं कि आप एमएस से आ रहे हैं. और इतनी सारी कंपनीज होती है कि अगर आपको एक कंपनी में आप नहीं निकाल पाए, एमएस के लिए और एमटेक के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर गुड. तो एनी स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए वैरायटी की वजह से चांसेस भी अच्छे हैं, और आपको अपनी मनपसंद की फील्ड लेटर ऑन चूज करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. मेरा गेट स्कोर अच्छा नहीं था, मैंने एक ऐसा डिपार्टमेंट लिया जिसमें शायद मुझे इंटरेस्ट नहीं था. ठीक है, मैं अपना एमएस का काम करते करते रिक्वायर्ड जिसमें मुझे इंटरेस्ट है वो स्किल एनहांस कर लूंगा. स्किल एनहांस कर लूंगा. मुझे एक एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, वंडरफुल, और उसको मैं यूटिलाइज करूंगा. मेरे खुद के एग्जांपल में मैंने एक्स्ट्रा पीओआरस किए थे. लाइक मैं करियर डेवलपमेंट सेल रिसर्च का पार्ट था. मैंने आविष्कार हाइपरलूप के बारे में बताया. हम लोगों ने हाइपरलूप की टेक्नोलॉजीज बनाई हैं. मैं स्टूडेंट जनरल सेक्रेटरी कमेटी का पार्ट था. एक ओवरऑल हर एक चीज आपका weight add करती है. Okay. So can we know, my last question to all of you is, if a student enters the gate of IIT Madras, any department, any course, I'm saying, can he enjoy a very good career? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना एफर्ट कर रहा है, या इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको क्या डिपार्टमेंट मिला या क्या कोर्स मिला? सो द मोमेंट ही जॉइंस IIT Madras, will he get a good job, good career, good opportunities? What is your answer to that? सर ये तो वैसे ही होता है, फाइट आपने खुद ने मारनी है. कॉलेज आपके पास कंपनी ला सकता है, वैरायटी की आपके डोमेन की कंपनी ला सकता है. नहीं आई, अगर कभी कभी कंपनियां बैकआउट भी कर जाती हैं तो आप अपने स्किल सेट पे ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो. Yes, as he हर said. साल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन कैंपस से बहुत अच्छी कैंपस प्लेसमेंट से आउट कैंपस में ज्यादा लेके जाते हैं. तो टोटल स्टूडेंट ने अपना टाइम कैसे यूटिलाइज किया? अब मैं इधर आके 24 घंटे गेम ही खेल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा ना, एमएस कर रहा हूँ ना मैं कोई स्किल सेट डेवलप कर रहा हूँ. तो ऑब्वियसली फिर कंपनी IIT is not क्यों लेके responsible. जाए? Yes, that is true. चलो, that is wonderful. Anybody wants to add anything else? Yeah. मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर. if you are getting admission in MS, then the first thing is to select your guide Okay. appropriately.
ओके, अब उसको कैसे सिलेक्ट करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं इनपुट आप लोगों से लूंगा। That MS degree is totally depend on your guide. Guide only, If your that is- guide is good, MS PhD is all about guide, yeah, all about your guide. that is true। That's- तो उस- And वो तो तुम सब लोगों को बोलना पड़ेगा। So that is true, and होते भी the है, best I thing mean, is that if you are entering into IIT Madras, then you will get hell lot of opportunity. okay, That's it. that is true। And now you have to work on your skill set, and finally you will get this. Okay, One last point I wanted to add here is कि IIT Madras is I think only IIT जहाँ पे MS के लोगों को भी internship करनी allowed है। मेरे दोस्तों ने Okay. internship करके PPOs लिए हैं। I अच्छा। am not sure कि दूसरा IITs में ऐसा allowed है कि नहीं है। तो अगर आप wonderful। सोच रहे हो कि केवल MTech को मिलती है, not a compulsion। MS को भी इंटर्नशिप मिलता है और उन्होंने PPO में कन्वर्ट किया हाँ, किया है। वंडरफुल इनपुट, वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। सो या जैसे इंटर्नशिप की बात की इन्होंने, तो वो गाइड पे भी डिपेंड करता है कि वो अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सारी बात गाइड पे आती है। गाइड पे अंत में हर चीज आती है, आपको लीव लेनी है, हर चीज है, वो सब गाइड पे डिपेंड करती है। अच्छा, तुम्हें गाइड कब चूज करना होता है, ये बता दीजिए। व्हेन डू यू चूज द गाइड? द मोमेंट यू जॉइन द डिपार्टमेंट? Yes, sir. We are given some time to analyze different labs and what their work is, and then based on that we are supposed to select our guides. Okay. So this is done in initial days only, and people are comfortable in doing this. But if somebody is facing problem, he can actually take his time to select his guide. Okay. That is also available here. That is also available. And one more thing I would like to add, that regarding this time, many students are afraid to join this course which might take more than 2 years. I think it depends on a lot of external factors, that MS can be completed in 2 years also, in less than 2 years also. Minimum duration for MS is 1.5 years, Acha. which is even less than the MTech. अच्छा, good। But if you are coming through this gate now, only thing limiting you is yourself. सही बात है। If people generally put limits on themselves. For example, we have to complete 5 courses now. People are only taking 2 courses in first semester, then again 3 Obviously courses वो in डिले हो second जाएगा, semester. सही है। People are like that. But if you complete all the 5 courses, it will not be easy. But if you are dedicated, you complete all 5 courses in first semester and dedicate rest of your time in research, Wonderful। it can be done. But why do it when you get a lot of opportunities in more time? हाँ, तो जल्दी में भी क्यों आना है? Yes, sir. So now या ये सब ठीक है। इफ यू कम इनटू आईआईटी इनसाइड आईआईटी गेट, डोंट ओनली कम फॉर स्टडी, जस्ट एक्सप्लोर द थिंग्स, चिल, कुछ एंजॉय भी करो। हाँ, एक बार आ गए तो कुछ ना कुछ तो हो ही Yes, जाएगा। just Saif and So- JD were saying they were enjoying Don't- first semester। हाँ, so don't panic, don't do like hell kind of thing and want to complete or something. If you have some kind of restriction and all these things, you can do, but you can enjoy the life here, then decide what you want to do and something. But Okay। don't come here only for studies. Yes। Come here for enjoyment also Yeah। and exploring things Combination, also. yeah। हाँ. So I think now I sum it up। You want to say something, JD? Yeah। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि इनिशियली वी हैव टू सेलेक्ट द गाइड, बट आफ्टर 1.5 year 2 years, if we are not comfortable with guide and we are not in harmony with guide, and any problem you are facing with your guide and your guide is not you are not मतलब आपका कंफर्टेबल लेवल सही नहीं है। कंफर्टेबल नहीं हो गाइड तो के क्या साथ, करता या है? गाइड का आपका कुछ भी मतलब आप इशू चल रहा है। हाँ इश्यू मतलब आप उनके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हो अपनी चीजों को, तो आप चेंज भी कर सकते हो। ऐसा अच्छा। कोई इश्यू नहीं है कि नहीं एक बार गाइड अलॉट हो गया तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो। आईआईटी मद्रास ये आपको फ्रीडम देता है कि अगर साल 1.5 साल 2 साल अगर तुम्हारा कुछ नहीं बनना है ना, तो आप गाइड चेंज कर सकते हो। अच्छा। और ऐसा होता भी है, काफी सारे लोग करते भी हैं और किया भी है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि अगर गाइड सेलेक्ट कर लिया तो बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन जो हुआ था वो मैकेनिकल डिजाइन में हुआ था, लेकिन मैंने जो डिजाइन में देखा तो जो मेरी प्रेफरेंस थी गाइड, इनिशियली वी हैव टू गिव सम प्रेफरेंस, तो जो मैंने प्रेफरेंस दिया था गाइड्स के लिए, सम प्रोफेसर आई सेलेक्टेड 3 प्रोफेसर, देन आई गिव प्रेफरेंस। सो उनमें से मेरे को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये हमारे ऊपर भी नहीं डिपेंड करता है, गाइड के ऊपर डिपेंड करता है। गाइड को मान लो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे किसी प्रोफेसर को रखा, इनने भी रखा है, उसने भी रखा है, लेकिन वो ये सेलेक्ट करेगा कि मेरे को इन तीनों में से क्या है। अगर फर्स्ट पे इन्होंने भी रखा, इनका सिलेक्शन कर लिया उनने, तो फिर क्या होएगा, तो मेरे को नहीं सिलेक्ट कर रहा, तो फिर मेरा
वो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, देन सेकंड। अब मेरा कोई प्रोफेसर सेकंड प्रेफरेंस पे है, लेकिन मान लो गोपेश ने उसको फर्स्ट पे रखा है, तो वो गोपेश को लेगा। तो ऐसे करके मेरे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, और मेरे को लास्ट में कोई गाइड अलॉट नहीं हुआ था डिजाइन में। तो दे आर गिविंग मी सम मोर प्रोफेसर, you can talk to them and you can join them, but their research field are some different from my interest. So I approached them to uh, explore more. I can shift to design to manufacturing or thermal. Then they fix a meeting with our HOD. Then HOD gave us a freedom to explore whole department mechanical. I can go to any professor if I like that professor. If I like his research work, I can join him. So they give some option there, and I explore manufacturing and thermal. After that things, then I selected my professor in manufacturing department. Now I'm in manufacturing department. सो आपने डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग करनी हाँ, है, मैंने डिजाइन से चेंज मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है या, मतलब, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो अंडरस्टूड, आईआईटी में आपको फुल फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी है, फुल फ्रीडम है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का ये मिसकंसेप्शन है, हम्म। तो कर सकते हैं, ठीक या है। कर सकते चलो हैं। मैं समराइज करता हूँ, आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स, मैं समराइज कर रहा हूँ। एक तो एमएस वर्सेस एमटेक का यहाँ पे सारा डिस्कशन हुआ है, और एमएस कोर्स इज अ वंडरफुल कोर्स, और आईआईटी मद्रास उसका एक रेफरेंस इंस्टीट्यूट है, एपिटोम है उसमें कि एमएस कोर्स कैसा होता है। हमारे पास ज़्यादा ड्यूरेशन है एमएस करने का, आप इसको 2 साल में भी कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। जैसा मेनी ऑफ अस बिलीव्ड हियर, ही आल्सो टोल्ड दैट जल्दी में क्यों हो, व्हेन यू कम टू आईआईटी एंजॉय द लाइफ आल्सो, चिल करो यहाँ पे आराम से। सो वंडरफुल इंस्टीट्यूट इन द लाइफ, यू विल मिस इट, लाइक पीपल लाइक मी नाउ, यू आर out of IIT now, so we believe that the best time was when we spent in IIT, so we should not be in hurry to leave these kind of campuses. So that is very good, I mean आपको रहना चाहिए, स्किल एनहांस करनी चाहिए, प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी ऑल एग्रीड के प्लेसमेंट एमटेक से भी अच्छा चल रहा है, जब स्किल ज्यादा बढ़ेगी तो तुम्हारा प्लेसमेंट भी अच्छा चलेगा। एंड मिसकंसेप्शंस है बहुत सी स्टूडेंट्स के बीच में, जिनको हटा देना चाहिए। द मोमेंट यू एंटर इनसाइड द कैंपस ऑफ इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी मद्रास, तो प्लेसमेंट एंड जॉब्स एंड करियर एंटायरली आपके हाथ में होता है, एंड इंस्टीट्यूट आपको जो दे सकता है, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट, वो आपको मिलता है। So that I felt when I talked to the students. Since yesterday I am interacting with students, and I did not find any single student who is not happy with the environment and the system he got in IIT Madras. So we end up on this particular note, and I'm really thankful to all of you. आपने अपना time दिया, and we had a very good discussion here, and I hope students who are listening to us, they will feel like interacting with you and get more guidance from you. They will contact you. Thanks a lot to all of you.